Assalamu alaikum and good afternoon. It's an honor कि मैं the legends of pulmonologist के बीच में मतलब उनके सामने and my mentor Dr. Ali Zubairi, Professor Sohail Akhtar, Dr. Musawwir Ansari. So time काफी वो है. So I'll be going through the IPF, a short summary, not a short summary, then nintedanib and pirfenidone पे थोड़ी सी बात करूंगा. So I'll be covering introduction, incident prevalence of international data, pathophysiology, natural history of disease, basis of the diagnosis and management and prognosis. So there may be overlapping. So it's a specific form of chronic progressive interstitial lung disease of unknown etiology, limited to lungs with poor prognosis, unfortunately, defined by histopathologic and radiologic pattern of UIP. Sometimes only radiologic pattern is sufficient for the diagnosis. Mostly in middle-aged or rather elderly adults. In US, the median age was around 62%, 54% of them were male. So the incidence is changing due to maybe the better understanding of the disease itself, ILD, and easily availability of HRCT and easy pickup post maybe COVID era. So its incidence is increasing and prevalence, the range is around 0.02 and 1.3 per 10,000 people, increasing day by day, year by year. US and South Korea and Canada have the highest incidence and probably will be having being in the picture in inshallah next few years maybe if our data publishes. So approximately 2.8 to 18 cases per 100,000 people per year in North America and Europe as well. So risk factors. So mutations in several genes are associated with an increased risk of IPF. Aberrant mucociliary clearance may lead to alteration in the lung microbiome and innate immune response that promotes IPF. So other non-genetic factors, older age, as we know, this used to be a disease of elderly, rather more than 60, slightly male gender predilection and associated with cigarette smoking. Other GERD is very important, the history of GERD, viral infections, pollution, and associated obstructive sleep apnea. So pathogenesis of IPF. Originally, it was thought to be a chronic inflammatory process that leads to fibrosis, but the understanding of its pathogenesis has been evolved to include genetics and environmental, as we talked earlier. So basically, there are repetitive microinjuries to the alveolar epithelium that triggers abnormal epithelial fibroblast communication, which eventually results in abnormal extracellular matrix accumulation in pathological lung remodeling. So ये अगर हम देखें सो ऑन द राइट हेल्दियर लंग अगर देखें तो वहाँ पे अगर कोई इंजरी हो जाती है तो बेसिकली नॉर्मल जो रिस्पॉन्स होता है बट इन पेशेंट्स विद जेनेटिक susceptibility, environmental exposure, smoking and other pollution exposure, aging, and also some epigenetic reprogramming. So there occurs stem cell dysfunction and exhaustion, a lot of growth factors productions that leads to a lot of interleukins, interleukin 24, 14, and 8 and 17, a lot of cascade that leads to activation of connective tissue growth factor, platelet-derived growth factors, and collagen deposition, followed by the fibrosis. This results fibrosis. So histopathological features include excessive, जो मैं अभी बात कर चुका, excessive जो collagen depositions, dense fibrosis leading to distortion of the normal lung architecture. If you see these black arrows,
In between these black corals, normal lung, and beyond these arrows, you can see dense fibrosis throughout the periphery of this lobule. So there'll be subpleural and paraseptal involvement, fibroblastic foci that has temporal heterogeneity of fibrosis, and patchy involvement. So natural history of the disease. So disease IPF कैसे present? We know that IPF is a very bad disease to begin with. किसकी prognosis नहीं है, ये सबको पता है. इसीलिए उसको label करने से पहले हमें throughout इनका वो चाहिए पूरा उसका panel and diagnosis of exclusion rather. So natural history, average annual decline in forced vital capacity in patients with mild to moderate IPF is 150 to 200 ml per year. Usually कितना होता है 30 तक मेल के करीब होता है after 34 years 35 years and मेल में 45 के करीब होता है per year decline, और फीमेल में 30-35 के करीब होता है. लेकिन ये 150 to 200 ml के करीब इसका माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में इतना इनका लंग फंक्शन डिक्लाइन होता है. So this further, अगर हम treatment start करें with perphenol antifibrotic, then this further slows down, but we can see rapid decline or accelerated decline in a stable patient, and also in a patient may present with a very rapid progression to begin with. So अगर हम यहाँ पे देखें, so there are three patterns में इनकी जो history है वो आती है. एक तो initially stable condition, they may present as a stable condition, then rapid decline of the lung function apart from the acute exacerbation जो कि हम देख रहे हैं उसमें. दूसरा जो है slow progression and declining, and third is very rapid progression. So initial stable होते हैं sometimes patients, and then they go down with rapid declination of their lung functions, and some entity slow progression throughout there. So if we see this AE means acute exacerbations. So all patients, when they develop acute exacerbation, their lung function declines very robustly down, और इनकी mortality भी आप देखेंगे काफी बढ़ जाती है. These all three almost 5 years इनकी life expectancy होती है maximum. So this is diagrammatic जो presentation है इसकी lung function decline की मैं बात कर चुका हूँ कि 150 to 200 ml decline mild to moderate में होता है. You see the healthy individuals aged 60 years, उनकी lung function decline किस तरह हो रही है, और IPF किस तरह lung function decline करता है over the period of years. So diagnosis पहले बात हो चुकी है. मल्टीडिसिप्लिनरी टीम चाहिए हमें, पैथोलॉजिस्ट भी चाहिए होगा, रेडियोलॉजिस्ट तो चाहिए होगा, और साथ में हमारे क्लिनिशियंस होंगे. So then we come to a consensus for the diagnosis of the any ILD including IPF. So कब सस्पेक्ट करेंगे? 60 years of or more of age, but it's not limited. Some familial IPF they present earlier, so history is very important. With unexplained respiratory symptoms, sometimes asymptomatic patients को भी आपने डिटेक्ट किया, Wilcroceps हैं, वो बाद में पूछा तो कह रहे हैं कि हमें dyspnea on exertion हो रही है, और रेडियोलॉजिकल जो है HRCT पैटर्न पे हमें डाल. Bibasilar inspiratory craps जो Wilcroceps की बात कर रहे थे, and symptoms mostly dry cough and dyspnea. Patient often have history of smoking and remote environmental occupational exposure, वो भी हमें देखने की जरूरत होती है. So HRCT बात हो गई है, हमने पहले भी बात की है. You can see in the axial and coronal section of this HRCT showing honeycombing, which is basal and peripheral, and some in the coronal section interlobular and interlobar septal thickening with some traction bronchiectasis on the coronal section, the right side. These are the axial view. On the right side on B image showing reticulation mostly, and the lobar and the lobular septal thickening, and some honeycombing, and it's more evident on the picture on the C. So I'll not go through this, but diagnostic
कहते हैं कि अगर रेडियोलॉजी में आपको सबप्लूरल बेजल प्रीडोमिनेंस मिल गया, साथ साथ हिट्रोजेनस इन्वॉल्वमेंट हो गया, हनीकॉम्बिंग विद इन विदाउट ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस और ब्रोंकियोलेक्टेसिस। रिसेंटली गाइडलाइंस में कह रहे हैं कि हनीकॉम्बिंग जब होगी तो ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस तो ऐसे भी होगा, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रॉबल यूआईपी और डेफिनेट यूआईपी जो है थोड़ा सा इंटरमिंगल ही रहते हैं। इसके इसके अलावा जो है अगर हनीकॉम्बिंग नहीं हो तो बाकी उसको प्रॉबल यूआईपी कहते हैं। इंडिटरमिनेंट में रेटिकुलेशंस होंगी, लेकिन कुछ ग्राउंड ग्लास आएगा, कुछ अदर फीचर्स आएंगी। अल्टरनेटिव में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जिसमें सिस्ट है, नोड्यूल्स हैं और सो ऑन। सो यूआईपी पैटर्न में वही जो मैंने बात की है, जो यूआईपी डेफिनेट पैटर्न होगा, जो डेंस फाइब्रोसिस होगी, पैरासिप्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फाइब्रोब्लास्टिक फोसाई होंगे और एब्सेंस ऑफ अदर फीचर्स होंगे। इनमें एक दो होंगे, लेकिन बाकी रेस्ट नहीं होंगे, या सिर्फ हनीकॉम्बिंग हमें मिलेगी तो फिर ये प्रॉबल यूआईपी में आ जाएगा। अदरवाइज अल्टरनेटिव में ये सारी चीजें नहीं होंगी। सो दोनों यानी हिस्टोपैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी प्लस ज़ाहिर है क्लिनिकल जो है इसकी हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर रेडियोलॉजिकल यूआईपी पैटर्न है तो इस मोस्टली कोई भी हिस्टोपैथोलॉजी पैटर्न मोस्टली आईपीएफ इस कंफर्म हो जाता है तक में ऑलमोस्ट। अगर कोई अल्टरनेटिव डायग्नोसिस ऑफ यूआईपी पैटर्न इज एक्सक्लूडेड। सो गोइंग टूवर्ड्स द मैनेजमेंट, आपने डायग्नोसिस मैंने डिलिबरेटली बहुत सारे वर्कअप हैं जो कि करने होते हैं, जो एक्सक्लूड करने होते हैं हमें ऑटोइम्यून फीचर्स को हिस्ट्री एंड उसकी बेसिस पे। साथ साथ इनकी हमें पीएफटीज कराने होते हैं। पीएफटीज में सारे आईएलडीज में आपको पता है कि नॉन स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट, स्पायरोमेट्री एंड बाकी जो पीएफटी में रिड्यूस डीएलसी और टीएलसी हमें मिल जाते हैं, तो इसमें भी मैंने वो बात नहीं किया। रिगार्डिंग डायग्नोसिस, आपने डायग्नोस कर लिया, सो वी विल गो थ्रू द मैनेजमेंट। एक तो हमें एंटीफाइब्रोटिक का डिसाइड करना होगा, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट एंड असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कोमॉर्बिड कंडीशन एंड अदर मोडालिटी जो कि हमें करनी होंगी। सो एंटीफाइब्रोटिक पे बात अभी कर लेंगे। सिम्टम्स मैनेजमेंट में रिहेबिलिटेशन है, कफ सप्रेसेंट है, you can use mostly जो codeine based cough suppressant and the heifer is a supplemental oxygen है, and palliative care if it's very advanced disease. Risk factor में smoking cessation is very important, exposure avoidance will be whatever the exposure was, vaccination to prevent the infections and anti-reflux measures. इसी तरह असेसमेंट ट्रीटमेंट में भी अगर ओबेसिटी के साथ है तो स्लीप स्टडी कराएं, नॉक्टर्नल ऑक्सीमेट्री कराएं, उसको ट्रीट करें। वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इज मोस्टली ज़ाहिर कैकेक्टिक होते हैं, लेकिन समटाइम एसोसिएटेड विद we have a couple of patients as well associated with obesity. Pulmonary hypertension को ट्रीट करें एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स को ट्रीट करें। लंग ट्रांसप्लांट के लिए एवेलुएट करें, अगर जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसेंटली वे हैव अ फैसिलिटी एट गम्बट, सो उस पर हमें बात करनी होगी। फ्यू कंसल्टेंट्स भी हैं हमारे पास, सो सपोर्ट ग्रुप एंड एजुकेशन करेंगे। एडवांस डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेशेंट स्टेबल है, आपके पास क्लिनिक में आया, आप उनसे कहें कि अगर आपकी कंडीशन खराब रहती है, क्योंकि हमने देखा था एग्जासर्बेशन होती है तो एकदम से डिक्लाइन हो जाता है। सो नन फॉर वेंट और ये सारी चीज़ें कि कहाँ तक हम उसकी मैनेजमेंट करें। इसके अलावा जो है फिर मॉनिटर करें डिजीज, मे बी एट 3 to 4 months इंटरवल और विद फिजिकल एग्जाम, स्पायरोमेट्री एंड वॉक टेस्ट, और मे बी 6 months और ऐसा फिजिशियन चॉइस जो ईयरली भी आप कर सकते हैं। डिजीज स्टेबिलिटी के लिए देखना है और डिजीज प्रोग्रेशन के लिए, एंड फर्दर आपने उनकी प्लान करनी है। अगर डिजीज प्रोग्रेशन हो गई है तो फिर क्या करना है। अल्टरनेटिव डायग्नोसिस सोचनी है, ये आईपीएफ की ही प्रोग्रेशन है या ये जो है कोमॉर्ब्स हैं, जो कंडीशन है वो आपकी कंट्रोल नहीं है। सो परफेनिडोन पे बात करेंगे। परफेनिडोन जो है can reduce all cause mortality and risk of hospitalization and benefits patients from with advanced pulmonary fibrosis. Exact mechanism is still unclear, but there are some जो है proposed mechanism can inhibit transforming growth factor beta mediated fibroblast proliferation and differentiation of fibroblasts into myofibroblasts. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो परफेनिडोन मायोफाइब्रोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन को रोक रहा है, मैट्रिक्स डिपोजिशन को रोक रहा है, फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन को
और रिड्यूस अपोप्टोसिस, इन सब चीज़ों को ये इंटरफेयर कर रहा है। सो क्या डोज होगी? As we know, 3 times daily dose should be given with food, or target dose is 800 TDS, maybe 2400 per day. Gradually increase करना है 1 week, maybe up 200 TDS, second week में 400 TDS, and third week में 600 TDS दे दें। विद फूड सारे टेबलेट्स एक साथ अगर लेने में मसला हो रहा है, उनको बोलें कि खाना शुरू करने के साथ 2 टेबलेट्स ले लें, फिर 2 टेबलेट्स ले लें, फिर उसके बाद 2 टेबलेट्स ले लें। एंड ज़ाहिर है इसके साथ-साथ आपने इनकी जो है वो जीआई सिम्पटम्स, नौज़िया, फटीग, डिक्रीज़ एपेटाइट, ये सारी चीज़ें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वेट लॉस और स्किन रैश और फोटोसेंसिटिविटी, तो इनको सारी जो एडवर्स इवेंट्स हैं उनके हवाले से भी इनको काउंसल करना पड़ेगा। ट्रिपल टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है nintedanib, which with antifibrotic effects, can reduce decline in forced vital capacity, inhibit pulmonary fibrosis. It can block PD, GF receptor, fibroblast growth factor, vascular endothelial growth factors. ये अगर इस डायग्राम में हम देखें तो यू कैन सी दीज टायरोसिन काइनेजेस, तो वहाँ पे जाके ये एक्ट करता है nintedanib, VEGF और FGFR1 और FGFR2, इन दोनों को जाके इनहिबिट कर रहा है। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है उसकी एंड रिजल्ट यही है कि मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स डिपोजिशन, इन सबको जो है वो रोक रहा है। 150 milligram BID, both ही simple dose है, but unfortunately we don't have it here. LFT should be monitored monthly for initial 3 months, then every 3 months thereafter. Nintedanib should be avoided in patient with moderate to severe liver impairment, child जो इसका class B और C है. Common reported side effects are diarrhea and nausea. So ये इनकी एक वो है कंपैरिजन है बेसिकली, दोनों को एट टू एट ट्रायल्स तो नहीं हुए, कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इट्स सेड दैट nintedanib कैन बी बेटर टॉलरेटेड। और जाहिर है न्यू जितने भी ट्रायल्स आए मोस्टली nintedanib पे जो भी फाइब्रोटिक लंग डिजीज में आए। So combination therapy was tried, and there are not much उसके साथ trials नहीं है, लेकिन जो trial है उसमें उन्होंने लिखा है currently proven that combination therapy of pirfenidone with nintedanib is controllable, safety and tolerability. Basically आपने मुख्तलिफ targets को, जो उसकी पैथोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, उसको जाके टारगेट करना। वो कहते हैं अगर आप मुख्तलिफ टारगेट्स को टारगेट करेंगे पाथवेज को, तो शायद फाइब्रोसिस को हम रोक सके। नॉवल थेरेपीज की बात करते हैं। सो पेमरिवलुमाब पे काफ़ी वो मतलब ट्रायल चल रहा है, एंड हॉट पाइपलाइन जो कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर को जाके इनहिबिट कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पे बात की थी। कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर जो बिल्कुल इस साइड पे है, उसको जाके इनहिबिट करता है। सो Zypress 1 एंड Zypress 2 ट्रायल जो फेज 2 ट्रायल इस पे हो चुका है, जिसके प्रोमिसिंग रिजल्ट हैं, बट फेज 3 ट्रायल्स आर गोइंग ऑन। सो Zypress 1 एंड Zypress 2 आर गोइंग ऑन, उसके रिजल्ट का हमें इंतजार होगा। इट हैज इन फेज 2 ट्रायल इट हैज गुड सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी, which is expected to become the new antifibrotic drug with better tolerability. ये मैंने मेटा एनालिसिस बिल्कुल सिस्टमिक रिव्यू लिया था, जिसमें 22 ड्रग्स पे, तकरीबन ये सारे ड्रग्स पे मल्टीपल ट्रायल्स हो चुके हैं, हो रहे हैं। और उसमें अगर हम देखें सो 47 जो ट्रायल्स है, जिसमें 9000 पेशेंट्स थे, रिपोर्टेड मोर्टालिटी बेनिफिट, और दे फॉलो अप ऑफ मे अप टू 52 वीक्स तक उन्होंने फॉलो किए। nintedanib, pirfenidone and sildenafil, they probably reduce the mortality, and in trial meta analysis की जो हम results की बात करें, pirfenidone और pembrolizumab जो है जो एंटीबॉडी है मोनोक्लोनल, वो may reduce the mortality, and colchicine, warfarin, और जो हमने Panther IPF ट्रायल की बात की थी, steroid azathioprine and acetylcysteine may increase the mortality rather. अगर हम लंग फंक्शन डिक्लाइन को रोकने की बात करें तो पेमरिवलिमाब, पेंट्रैक्सिन, nintedanib, pirfenidone और nintedanib प्लस sildenafil में
probably reduce the decline in FVC. Colchicine के हवाले से मैं colchicine और ये steroid azathioprine और simple steroid may increase the mortality. So moderate severity with this जो meta-analysis only sildenafil probably reduces acute exacerbation of and hospitalization. We need more study to confirm that. In high certainty में corticosteroid जो Panther IPF trial वाले जो भी try होता वो has serious adverse events and deaths as well. Prognosis gap score हम देखते हैं. And but as we know, we saw the prognosis is still after developing antifibrotic and a lot of supportive treatment, prognosis is still not good. In 2 to 5 years उसकी survival है. The cause of death is mostly respiratory failure due to fibrosis. Thank you.